Yeah, we start. Yep. We start. Okay. Good afternoon, everyone. On behalf of Maharashtra State Chapter of Neonatology, National Neonatology Forum, I welcome you all for our CNE, and I'll hand it over to Dr. Jessel. So Jessel will guide us through the program. It's a very interesting thing, and it's helping all the nurses throughout this year. So I'll hand it over to Jessel. Jessel, please. Hello, good afternoon, everyone, and we welcome all of you over here. I think we are doing these seminars for quite some time. Today we have two very interesting speakers, very learned speakers, along with very learned expert, and the topics are also very exciting. And we are going to actually learn the drug calculations, and along with that, a very crucial aspect of neonatology, which is basically the neonatal transport. So first about the topic. So neonatal transport, I think all of us who are working in the neonatology, we do transport because many times the birthing place and the NICU is not situated in the same hospital. Sometimes within the hospital also we call intramural transport, where we have to actually transport the baby within the facility. So safety is very important, and for that what precautions we can take, how we can team up, how we do pre-briefing, what are the possible complications which can go wrong, and how do we optimize it and do the safe transport. That is a very important and very interesting topic. And the second topic is actually very close to my heart, and that is drug calculations. Even in today's world, though we don't audit in the India, but there are a lot of people, they are not dying because of the the diseases, but because of the medication errors and all the hospital acquired problems. So this is extremely important. And as a neonatologist, even me myself as a trainee, as a consultant, now as a even today I end up making a lot of decimal errors. So how, and sometimes we are sleep deprived, sometimes we have social issues, sometimes we have unit stress, sometimes we have work overload. So many things keeps on going on as human factors in our life, and because of babies are very tiny, and all of us end up making some or the other calculation errors in our day-to-day practice. So in our unit, always we should have a habit of checking the drugs 3 times. So the one person writes, which is the prescription, and then the another person, the other doctor checks, and then the nurse triple checks. So all nurses must know the calculations of the commonly used medications, and then every transfer actually increases the risk of infection. So all those things also have to be kept in the mind. And to elaborate all of those things, we have a two very the first speaker is Mr. Prashant. Mr. Prashant is a practicing senior educator and the nurse in practicing in Aurangabad. Very passionate educator and very renowned in his area. And second is Dr. Prashant Dixit. He is a very good friend, very great sense of the humor, very good neonatologist, very sweet neonatologist, unlike many of us, or unlike me, very sweetest neonatologist, and very passionate educator. And I mean, I was a student in the NRP course. So Dr. Prashant is a practicing senior neonatologist practicing in Mulund at Harvard Newborn Care. And along with it, I would like to welcome Dr. Anshu Shetty. Ma'am is a practicing senior neonatologist in Jahangir Hospital, Pune. So ma'am is going to be the expert for the whole session, going to kind of summarize and give us the comments and her experience at the end of its session. So Anshu ma'am, over to you. Any words you all would like to say before we start the session, and then we ask Mr. Prashant to start his talk. Prashant brother, please upload your Prashant brother, can you just start your slide presentation? Ma'am is facing some kind of the troubleshooting. I'll have a word with her, but you just start your presentation, and ma'am will just join as soon as possible. Hello. Hello. Good evening, one and all present here. Hello. My voice is audible, madam?
We need to unmute the all the co-host. Can you please unmute Dr. Anshu? Hello, madam. Can I start? Please start. Please start. Yes. Okay. Good evening, one and all present here. Myself, Prashant Birade. I'm working as a neonatal nursing officer in GMCH since 2014. Actually, I'm working as madam said, like a nursing, practicing plus education. Plus, I am taking a mentoring visits, and I become a national mentor for the NQCN, National Quality of Care Network, Delhi. And Muskan, I'm presenting as a mentor for Muskan also. We go on neonatal transport. What is neonatal transport? Neonatal transport, it means transport of sick newborns, preterms, and low birth babies to the appropriate health facility. All we know and picture also shows that how neonatal transport means the babies are sick babies. We need to transport for appropriate health facility. That we are shifting babies. Why need to focus on neonatal transport? Actually, what is the need of focusing the neonatal transport? In utero transfer is the safest transport, but unfortunately, preterm delivery, parental illness, and congenital malformations cannot always be anticipated, resulting in continued need for transfer of babies after delivery. These babies are often critically ill, and the outcome is partially dependent on the effectiveness of the transport system. So, effectiveness of transport is very important. So that's why we learn to neonatal transport. Many of the babies are transported are cold, blue, hypoglycemic, and 75% of the babies transferred the way have serious clinical implications. In India, there is so much lacuna in the transferring that type of babies. So in India, majority of the deliveries still occur at home, approximately 60% in rural areas, as per the National Family Health Survey. 60% babies till now also born in village area. So at home only, at home, from home to transferring the baby to the primary health center or sub center, and then the higher center like a district hospital or tertiary care. So very important as a nursing perspective and as a medical perspective, we should learn what is a neonatal transport and what the need of neonatal transport. Goal of neonatal transport to bring advanced neonatal care to the bedside of patients who are not proximity to a tertiary care and ensure safe transport to the hospital that will provide their definitive care. To bring advanced neonatal care. In PSC, we can't give the advanced neonatal care. So we should transport to tertiary care facility. According to our
action neonatal India newborn action plan, ending preventable newborn deaths to achieve single-digit neonatal mortality rate by 2030 is the first goal of India newborn action plan. So, in that way, transport of sick newborns is important link in the chain of interventions required to produce good neonatal outcome. So, preventable newborn death, how will going to achieve this our 2000 single digit neonatal mortality rate through the best transport system or best for the good neonatal outcome. What the concepts of transport between different types of health facilities. Already I discussed 60% home deliveries are there. So family from home to hospital, whatever home delivery is there, then ship the baby. मैंने तो hotspot ले लिया. Transport within hospital, including transport from delivery rooms to patient caters to the NICU. Transport for neuroimaging special procedures from NICU. Like within the hospital, we can transport the baby. Third one, transport for specific care. Movement to a regional center or cardiac, neurological, renal, or surgical opinion. Those babies have some anomalies. That baby we can ship for the specialist care, like surgery or cardiac to deco or neurological examinations. Fourth one, transport from other hospital, referred from peripheral hospital for ongoing intensive care, where when mothers deliver prematurely without warning, either locally or long distance, from one hospital to other hospital, we can ship. And the fifth concept is the reverse transport, means returning neonate back to referral hospital or units closer to home once critical phase is over. After surgery or after some examination like neurological examination or cardiac exam, we can reverse back to that patient. So the five concepts are for the neonatal transport. Now we focus on key components of neonatal transport. That five very important components for the neonatal transport. First one is the human resources. Second one, vehicles and equipments. Third one, communication and family support. Fourth one, documentation and consent form. And fifth one, feedback from referring unit. What is human resource? We know what is who's human resource means. Who's the leading for the neonatal transport? Like the doctor is there, one nurse is there, or ANM, ASHA, the driver also is there. Then whatever, the AYA, all people are come within the human resources. Vehicles and equipments means whatever, which ambulance we are going to use. The ambulance conditions there. Then equipment means ambulance with the gas is there, all facilities for the transporting baby, whether all facilities are available in that vehicle or not, that we will see. The very important communication and family support. For the communication, we need to family support. Family support with mother also. We take the mother for the transport and with the family support. And the fourth one is the documentation and consent. Very important documentation. What the causes are there? What cause and concern for the relatives? Why we are shifting the baby? What is the transportation hazards and all the danger signs we can give, explain to them. And last one is the feedback from referring unit. What the feedback from referring after completion of our transport, there will be feedback from referring unit. So how to organizing the transport process? Working model. Very simple mnemonic is there for accept. We can, when we are going to organize any transport process, what the accept means, that A, C, 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 E, P, T. A stand for assessment. What assessment we are going to do? The C stand for control. This again C stand for communication. E stand for evaluation. P for preparation and packaging, and T for transportation. That all we can check that mnemonic. Assessment. In the assessment, key questions are to be addressed. What are clinical issues? What was the cause for the neonatal for transport? So we can laterally discuss what is the indication for transport. What has been done till now, and how the newborn is responding.
Means in district hospital or civil hospital, whatever what care we are giving, and after we want to shift in tertiary care unit. So what we manage and how it's not responding the baby, so we are shifting to baby with another hospital. And what is needed now? That all assessment we are going to do. Then we see indication for transport. Very important. Why we are going to transport the babies? Which types of babies? The first one is very low birth weight baby, especially below 1,250 grams. Prematurity, gestational age less than 32 weeks. Respiratory distress, apnea, requires supplemental oxygen. Apnea requiring bag and mask ventilation. Cyanosis persisting despite oxygen therapy. Hypoxic ischemic encephalopathy, stage 1, stage 2, whatever. Required intubation and assisted ventilation. Develop seizures activity, multi-organ involvement sepsis with sign of systemic infection. Literally jaundice with potential for exchange transfusion, active bleeding from any site. Infant of diabetic mother or hypoglycemia unresponsive to recommended treatment. Surgical conditions like congenital heart disease, antenatal diagnosis or suspected. Heart failure, surgical conditions also top also is there. Heart failure, arrhythmia, suspected metabolic disorder, severe electrolytes abnormalities. Infants require special diagnostic and therapeutic services like CT scan, MRI, that all indication for neonate for transport. The next we'll see the control. Control initial assessment usually controls situations like who will be the team leader, whose role in the coordinate transport. Means in sub center, ANM is there or ASHA is there. So she is going to coordinate. She is calling to the referral unit. She is calling to the driver. She is counseling with the family and all the aspects. So one of the team leader and she will allocated to the work to all people. What tasks need to be done? Clinical care, equipment, and resources. All the things are she can do. Who will do this? Team allocation by team leader. The team leader decide for allocation. The very important communication. The third C stand for communication. So one of the key elements for smooth functioning of transport. Referring team should make decision to transfer with parents' agreement. Without parents' agreement or without taking their support, we can't transfer the patient. So very important counseling with the family, counseling with the mother, provide clinical details to transport team, such as name, weight, gestation, history, clinical details, interventions, investigations, and all results. Means why we are clinical details like a uh, cardiac problems are there or baby's respiratory distress. So we are not going to manage her. So we are planning to transport that neonate. Document medication and other advice received. Whatever medication we are giving, that also important to document on. Then one discharge summary should be prepared with the clinical details and pending investigation result or images to be reviewed by receiving hospital. Who's the physician or clinician is there? He will see all the details. What is the clinical investigation we did and what we want to do. So communication is major role for all. Communication to the referring unit, communication to the teams, communication with the family. Evaluation. Successful transport needs meticulous evaluation by referring clinician, transfer team, and receiving team to evaluate urgency of the transfer. So how will successful transport evaluate that referring clinician? Why we are referring transport team? Transport team is very trained and skillful transport team is we need. And receiving team also that by urgently take the transfer. To act in emergency for time critical transport such as extreme prematurity, congenital diaphragmatic hernia, gastrochasis, ventilated tracheoesophageal fistula, intestinal perforation, drug-dependent cardiac lesions, not responding to prostaglandin infusion, and other unstable condition. That's very emergency condition. We should transport the baby. Preparation and packaging. So what the preparation we are going to do? We see the preparation for transfer begins soon as decision is made to transfer the baby. Three essential components are clinical care, location,
checking the equipment and role allocation by team. Clinical care can be optimized by checking the requirement for airway breathing, circulation drugs, environment, incubator mattress, for temperature care and cooling, fluids and blood sugar and gas. We'll go one by one laterally. So neonatal transport, every newborn should be appropriately stabilized before transport. Before transport, we should stabilize the baby. Well-organized neonatal transport involves multiple stages, planned execution by trained team. Very important, skillful and educated trained team we need for the transport. Level of neonatal care. So which level we are going to understand the level of neonatal care. Primary level means like a routine newborn care, thermoregulation, postnatal care, like a stabilization. In home delivery, if it happens, then sub-center can manage all these things. Or some PSC also, they can manage the routine newborn care, thermoregulation, and postnatal care and stabilization to KMC, breastfeeding, and mother education. And they can primary level care we can do. What the secondary level? In the secondary level, we see the preterm neonates, like parental asphyxia is there, jaundice. We need oxygen, phototherapy machines are there, intravenous fluids that baby needs. So we go for secondary level. And then the third is the tertiary level. Tertiary level like a medical college. The secondary level managed by civil hospitals or some hospitals. Tertiary level is medical colleges or higher institutes. In that extremely low birth weights babies, advanced critical care we need, high frequency ventilation, then MRI, CT scan, 2D echo, that diagnostic investigations need. So we go for tertiary level care. So next we'll see the modes of transport. So in India, we are using the road transport. It's a very easily available and less cost also is there. So we can using a road transport, and then rotary wing. Second is a rotary wing. Rotary wing is like helicopter. We are not using in the India. It's very easily. Means in road transport we can. And third one is a fixed aircraft, wing aircraft. So vehicles we can see the secure fixation transport incubator. Means in the vehicle we should the fixation of transport incubator. Type of vehicle like 100 to 150 kilometer we want to go, then minivan or long ACV you can use, or up to 300 kilometer then we use van or mini truck. We see the vehicles in environmental condition also, means that it's not like that the septic is there, that ambulance. And very important, rapid and safe transport we can do with the vehicle. In the equipment, we just see the in vehicles, transport incubator is there, power backup available or not, gas supplies in available should be available, ventilator should be there, syringe infusion pumps, monitors, are all the things should be available in ambulance. When we are going to transport baby, there is a three models we can use for the stabilization and neonatal care. Maybe you can apply whatever three. The stable, first one is stable. S stand for sugar, temperature, artificial breathing, blood pressure, laboratory, emotional support. Stable. Then second one is the safer. You can use the safer. Sugar, arterial circulatory support, family support, environment, respiratory support. Last one is the stops. Means sensorium, temperature, oxygenation, airway breathing, and perfusion or sugar. Whatever three model we can use, first one is stable or safer. Whatever you can use and stabilize the baby before transport. So nurse's responsibility in transport. Thermoregulation is a very important task for the before transportation. Then we see the airway breathing, circulation, blood sugar, train transport personnel are there or not, continuous monitoring, assessment of neonate, equipment checklist, communication to referral unit, documentation, consent, and feedback. All the very responsibility
important responsibility. So we see the one by one. What the thermoregulation? Before transporting the neonate, you check the neonatal temperature, or see the use the transport incubator if available, and ensure ambient temperature around 25 Celsius. But pre-warm the baby to normal temperature before transferring into the transport incubator. Before uh, putting the baby in transport incubator, we should pre-warm the baby with the mattresses with the warm. Then portable warm mattress such as embrace, polythene wrap, and head cap. We can warm the baby with the mattresses, wrap, or head cap. For preterm, very low birth weight baby's skin to skin contact methods such as kangaroo mother care by mother or attendant are very useful to maintain the temperature during transport. So thermoregulation is a very important part for the neonate. So first we see the thermoregulation. This next one, airway and breathing. Before transporting, we should the baby's respiration, how the baby is respiring. Keep neck of the baby's slight extension. This is the sniffing dog position we are saying, sniffing position with the shoulder roll. If airway is not maintainable, better to provide respiratory support by continuous positive airway pressure setup using PFS resuscitation. Intubation and ventilation. If required, intubation should be considered in case of increasing respiratory distress or oxygen need, recurrent apnea, recurrent seizures, congenital heart disease requiring PGI infusions, congenital diaphragmatic hernia. Ventilation may be provided with the transport ventilation or self-inflating flow inflating bag with tube ventilation. All the things we see the before transporting, and we all if the baby is not stable, we can ventilate and we can shift the baby the higher centers. Then the third one is circulation. How would the assess the baby with the CRT, means capillary refilling time. Less than 3 seconds, we can check the capillary refill time, blood pressure, tone activity, and sensory. We see the check heart rate is there, how much is 100 to 160 or less than that. Tachycardia is there, or check the urine output, how much baby is urine output is there. Assess the need of fluid bolus, check what fluid baby is getting and whether baby is on inotropes. Adjust infusion to inotropes as per need. Core and periphery temperature difference by measuring abdominal skin temperature and palm sole temperature by dorsum of hand. We can check the circulation also. The very important blood sugar. If the baby in transport, it takes 2 to 3 hours and baby is hypoglycemic, so major complications we can see that. So before transporting, we check the blood sugar with glucometer. In the during transport also, if the baby is hypoglycemic, we can give the blood glucose less than 40 mg per dl, give 2 ml per kg of 10% dextrose throughout the intravenous line. Check the patency of IV cannula and start IV fluids. Laboratory workup. Check all investigation of babies. Check all the medication received. What the medications to the baby. Then transport personnel. Who's the transport person? Mother, attendant, ASHA from community or basic health facility, trained nurse, paramedic, or physician at the receiving. All the transport personnel should be very clean and very important to neonatal care. Like drivers also know that neonatal resuscitation or how to take care of the neonate. Very important monitoring from before transporting, in during transporting also very important monitoring. Continuous monitoring is the key of safe transport. We check out the heart rate, blood pressure, saturation pressure should be monitored continuously. We can use through the monitor or respirator meter. We can check out. Then temperature, ABG, blood sugar, and should be measured as per the need. Check oxygenation. Continuous pulse oximeter monitoring is preferable. Observe the central sinuses if possible. Perform blood gas analysis before the during transport.
Feeding may be withheld during the transport, and open orogastric tube should be in situ. Means whether baby need a feeding, then we can give the breastfeeding cancer if baby accepts. So avoid to feeding with the transport. Brother, request you to wind up in 5 minutes because we have then drug Yes, calculations. ma'am. Yes. Our the equipments very important. All the equipments before the equipment checklist is there because equipment checklist in the respiratory support equipment. Before transporting, we see the all equipments available for our vehicle. First one, oxygen and cylinder, appropriate indicators of line pressure and gas content, flow meters, oxygen hood, neonatal size mask and cannula, continuous positive airway apparatus, neonatal positive pressure bags, laryngoscope with 00 and 01, endotracheal tubes, mechanical ventilation with backup circuit, ET tubes, then thermal equipment, we see the transport incubator, thermometer and temperature monitor probe, plastic wraps, insulating blankets, heat shields, for the suction, mucus suction trap, suction catheters, then suction machines, sterile gloves, feeding tube, all we need. Checklist again, monitoring equipment. What monitoring we are going to use? Stethoscope, cardiac monitor, pulse oximeter with sensor probe, glucometer with strips, syringe pump with syringes to 5, 10 ml, 20, 50 ml, angiocath, micro drip set, medication we taking the calcium gluconate to surfactant, dopamine, sodium bicarbonate, adrenaline with the pre-filled syringe. In emergency, we can use that. So, arrival of death from hospital, the receiving team needs to evaluate the current status of the unit as the condition will be changed from the time patient was discussed. Means before when the communication is started for the transporting, what is the any emergency or what is any problems for that that we can check out. Always be supporting non-critical to the referring team and involve the staff in case of need extra hand. Transport and take consent before transferring the baby. Consent is very important for transport. Potential treatment should be obtained from the transport. It is important to assess the cardiorespiratory status and anticipate respiratory and inotropic support. The team should be secured IV access and prepared fluid in case of ventilated patient. The transport team needs to ensure that endotracheal tube is secured properly and its position should be confirmed by the clinical examination. So maybe when come with the NICU, so what we are going to see that before reaching the receiving unit, the clinical condition of the baby should be informed and readiness of unit should be checked. At arrival, receiving, return the handover, clinical details and management should be given to the treating team. Once the patient has reached receiving hospital, information about patient's condition and care given during the transport. So, summary of safe newborn transport. Prepare well before transport. Before the transport, we should preparation. We check the all equipment, we check the vehicles, we check the counseling and all documentation. So communication, write a note, assess and stabilize. Before transport, we should stabilize the baby with the vital stabilization, with the blood sugar, correct hypothermia. And during transport, what we are going to caregiver to accompany, train nursing staff, train physician, train ANM or ASHA. Important to caregiver should be accompanied. Arrange a provider to accompany or ensure warm transport. Transport should be very warm. So safe transport through all these things. What are challenges in developing countries? In our so the communication before and during transport. The lack of communication due to we can get the problems. Adequate of the team and transport unit. Stabilization before transport. So stabilization before in emergency without stabilization the baby that baby uh, get emergency conditions in the during transport only. So before transport we should stabilize the baby. Continuation of basic supportive care, equipment maintenance and functioning. The vehicles and equipment also maintain and function. Documentation of patient status. Every patient condition should be documented. Quality indicators and benchmarking. Each hospital unit should have transport committee, which is evaluate the transport performance and assess the safety of transport for quality improvement and benchmarking. The unit should have a written policy and protocol
and the transport team need to adhere to it. Way forward to realize the potential life-saving value of neonate transport. These three steps are essential. Strengthening capacity for prevention, recognition, stabilization at the community and first level health facility. Designing system for ready access effectiveness trials transport of patients to higher levels of care. Increasing capacity in terms of skills and volume at the higher level of care. So using smartphone tracking device, sharing clinical data, images, and continuous monitoring and feedback during the transport might help to save an effective transport. Data collection, auditing, and adherence to quality benchmarkers are key in quality improvement. Oversight of national level authorities like professional bodies may be necessary to achieve adherence to established regulations and guidelines, regional helpline, and emergency rescue team with the neonatal ambulance. Networking with 108 ambulance, monitoring centralized real-time bed availability to guide the transport team. Thank you so much. Anshu ma'am, would you like to give comments? Thank you, Prashant. You gave us a very good insight into neonatal transport. It is very true that a key to neonatal survival is a good transport team and hemodynamic stability during neonatal transport. And most important, as we are looking forward to survival of even smaller babies and bringing babies from periphery, we have to have good transport, especially if there's a heart disease or a congenital diaphragmatic hernia, in which he described very nicely the accept model of neonatal transport. In case it's a high-risk baby, we need to have a team and especially tracking throughout the transport. Yes. And only one question, during air transport, do we need to monitor any specific saturations or any specific drugs while if a baby is having heart disease or any congenital heart disease or congenital heart syndrome like a TAPVC? Actually, ma'am, in air transport, we note the high altitudes are there. So that time means air transport is easily, but not available. Means in India, we are not going to do this. Yes, that can be the way forward. Yes. But it was a very lucid lecture and it gave very important key messages to all the staffs and all the doctors. Thank you, Prashant. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Over to ma'am. Jessel ma'am. Hello. Very, very nice talk, Prashant brother. So we will like now, without wasting the time, we hand over to a very dear, very learned, educated Dr. Prashant Dixit, because the next topic is actually very interesting and we need a lot of time. Over to Dr. Prashant. Thank you very much. Thank you, Dr. Anshu Madam, Dr. Jaisal, and Dr. Ashish Dhongre for inviting me for today. Am I audible? You are loud and clear. Okay, is my screen visible? Is the presentation visible?
I am unable to share the screen. Did you ask anything? Sorry. I'm unable to share the screen. Can someone help in that? You are the host actually. No, you are not the host. That's fine. No, you are co-host. Prashant. Yeah. Right. Prashant, brother, अगर आप बंद कर देंगे slide show, तो Dr. Prashant will be able to share. You are host, Dr. Prashant. Ma'am, I already stopped sharing the screen. Okay. Okay. अगर नहीं हो रहा है, give it to me. I will share. Is the presentation visible? Yes, and if the slides are moving, and they are lovely. Okay. And the presentation has like twice you could start it, but again it has gone away. वो शेयर कंटिन्यूएशन में नहीं हो रहा है, वो शेयर होने के बाद में वापस चला जाता है. Okay. Now again the screen share is starting. Okay. Now I think I'm visible as well as audible. Yes, perfect. Okay. So, as Dr. Jaisal rightly said, that today's topic is very important from a practical point of view. We are going to look at the medications, calculations and errors. So हम सब ने कोविड में तो बहुत सारे मास्क पहने, बहुत सेफ्टी के हिसाब से were very cautious, and that is what is today's topic, safety. So जो basic science है नर्सिंग का या मेडिसिन का या हॉस्पिटल केयर का इज फर्स्ट डू नो हार्म. पहले तो किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को नुकसान नहीं करना है और हेल्थ सुधारनी है. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल केयर. टू एयर इज ह्यूमन, इंसान से ही गलती होती है डेफिनेटली, बट हम कोशिश कर सकते हैं दैट वी बिकम स्मार्ट हॉस्पिटल्स एंड वी ट्रीट पेशेंट्स सेफली. इसकी हमें कंटिन्यूसली कोशिश करनी चाहिए. Lot of studies have shown that commonest cause of death, so सबसे बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर पे हार्ट डिजीज, सेकंड पे कैंसर एंड थर्ड पे बड़ा नंबर है मेडिकल एरर्स का. सो हॉस्पिटल्स जहां पर हम ट्रीटमेंट के लिए या मेडिसिन के लिए या इलाज के लिए एडमिट होते हैं, उसमें एरर्स, मेडिकल मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स, इसकी वजह से जान का खतरा भी काफी हो जाता है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितने लोग ये प्रॉब्लम या मिस्टेक बताते हैं. कुछ लोग थोड़ी बताते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बताते हैं, कुछ लोग पूरा बताते हैं. सो ये सबसे बड़ा इशू यही है कि डिस्क्लोजर नहीं है. हम बताते ही नहीं, हम डिस्कस नहीं करते, हम शेयर नहीं करते कि यार मैंने ये दवाई गलत दे दी, मैंने ये डोज रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. एंड इसके लिए जो अड़चन या बैरियर्स हैं, टाइम ही नहीं है बताने का कि मुझसे मिस्टेक हुई, या मैं एक को बताऊंगा वो 10 को और बताएगा. किसको बताऊं, अपने कलीग से शेयर करूं, बॉस को बताऊं, बॉस डांटेगा, या अगर मैं कोई सिस्टम यूज करता हूं जहां पर मैं अपने मिस्टेक नोटिफाई करता हूं, इससे लगेगा यार ये पर्सन केपेबल नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट आएगा, इससे मिस्टेक्स होती हैं. या शायद ये मिस्टेक ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा ही तो, जरा सा ही तो डोज में फर्क हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है.
So these are the common issues why we don't even inform, update or seek help. अब ये जो मेडिकल एरर्स होती हैं, मेडिकेशन एरर्स होती हैं, ड्रग एरर्स होती हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो पेशेंट का होता है, उसके फैमिली का होता है. दे आर द फर्स्ट विक्टिम्स. बट ऑफ कोर्स डॉक्टर्स और स्टाफ भी इसमें पीछे नहीं है, उनका भी नुकसान होता है. उनका कॉन्फिडेंस हिलता है, उनका सक्सेस रेट डाउन होता है, उनका जो अचीव करते हैं वो उसको उनको अपने कैपेबिलिटीज पे डाउट आने लगता है. और कुछ केसेस में जहां पर प्रॉब्लम बढ़ के नुकसान होता है, वहां पर उनको जो गिल्ट फीलिंग है या जो दुख है वो कई बार लाइफ टाइम रह जाता है. सो ऐसा नहीं है कि ये गलती का नुकसान सिर्फ एक या दो जन को होता है, इसको सबको तकलीफ होती है, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पेशेंट, फैमिली, सबको. बट ऑफ कोर्स पेशेंट को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होता है. ही इज द फर्स्ट विक्टिम. अब रिकॉर्ड इसका करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो हम सुधार किस चीज का करेंगे. आज मुझे क्लास में 80% मार्क्स आते हैं, उसका रिकॉर्ड आता है, तो कल मैं सुधर के 82 ला सकता हूँ, 84 ला सकता हूँ. आज जैवलिन थ्रो हम करते हैं 89 मीटर्स पे, कल हम रिकॉर्ड तोड़ के 90 पे जा सकते हैं. सो हम जब तक कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसमें सुधार नहीं ला सकते. इसीलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट और पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए हमको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है. और हमें एडवर्स इवेंट्स स्कोर करने चाहिए अपने हॉस्पिटल में, अपने फैसिलिटी में, अपने क्लिनिक में, अपने यूनिट में. बहुत इंपॉर्टेंट है हमको एडवर्स इवेंट्स रिकॉर्ड करना. नाउ वंस वी नो कि हमें मेडिकल सेफ्टी के बारे में, आई थिंक वी ऑल अग्री कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए. हम अपने फील्ड में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने हॉस्पिटल्स में हम लोग क्या क्या करते हैं. आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर डूइंग समथिंग और दी अदर. जैसे डॉक्टर जेसल मैम ने बोला, ट्रिपल चेक करते हैं हम सिस्टम. कोई जन जब 2 बार दवाई चेक करते हैं, कहीं पर 1 बार करते हैं, कहीं पर 4 बार होगा, वेरीफाई करते हैं, दूसरा जन देखता है. सो देर आर वेरियस सिस्टम्स, पेपरलेस सिस्टम्स आ रहे हैं अभी. सो हम लोग अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं. सो हमारा मेन एम है हेल्पिंग द पेशेंट टू गेट बेटर. हमको पेशेंट को अच्छा करके हॉस्पिटल से भेजना है. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अस ज्वाइनिंग नर्सिंग केयर, हॉस्पिटल, मेडिकल केयर, स्टडीइंग या वर्किंग इन दिस प्रोफेशन. ओके. और इसमें सब लोग की जिम्मेदारी है. एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल. ऐसा नहीं है डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरएमओ सब देख लेगा, नहीं. हर एक जन, फ्रॉम द डॉक्टर टू द आरएमओ टू द नर्सेस टू द मॉशीज टू द हाउसकीपिंग स्टाफ टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल. एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. सो हमारा मिशन होना चाहिए कि हम रोज बेटर होंगे, हर मोमेंट में हम बेटर करते जाएंगे. तो ये हमारा मेन मिशन है. देयर इज अ वेरी फेमस मंकी बिजनेस इल्यूजन मॉडल. ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. कुछ लोगों ने जिन्होंने ये देखा है या यूज किया है, दे विल एंजॉय इट डेफिनेटली. वॉच इट. और उसी मंकी बिजनेस इल्यूजन मॉडल का जो आगे की सोच है वो है कि हम लोग डॉक्टर्स या स्टाफ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं दवाई देते समय. नहीं, हर बार दे रहा हूँ, पहली बार थोड़ी ये यूज कर रहा हूँ. सो हम ओवर कॉन्फिडेंस में बह जाते हैं. कई बार ईगो जाते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है क्या डोज है. या बॉस से कैसे पूछें, वो तो सीनियर हैं. सो हायरार्की रहती है. स्टाफ बॉस को क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, या जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को नहीं पूछते, या डॉक्टर अपने कंसल्टेंट को नहीं पूछते. सो ये प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार एरर्स में छुप जाती हैं या दे आर स्वेप्ट अंडर द कारपेट बोल सकते हैं. इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. पहली चीज, हमेशा रीड बैक करिए. जो भी मेडिसिन लिखी है, जो ड्रग लिखी है, उसकी इंडिकेशन क्या है, उसको क्या डोज में कैसे कब देना है, वो हमेशा रेफर बैक या रीड बैक करिए. उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए और उसके लिए 6 आवर्स जो है, 6 राइट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मेडिसिन और ड्रग, वो अप्लाई करिए. क्या है ये 6 राइट्स? लेट अस सी देम. ओके. ये ग्राफ है जिसमें आपको, इफ यू सी नोटिस, जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ लाइव्स लॉस्ट पर ईयर है, और जो वाई एक्सिस है उस पे आप देख रहे हैं कि क्या सिस्टम्स है. जैसे हेल्थ केयर सिस्टम है, ड्राइविंग है, फ्लाइट्स हैं, शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं. सो शेड्यूल्ड एयरलाइंस में जो एक सिस्टम होता है चेकिंग का, या जो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो उनकी चेकलिस्ट होती है, दैट इज अल्ट्रा सेफ.
उनके यहाँ कैजुअलिटी इज लेस देन 1 in 1000 1 lakh इवेंट्स. सो इतना ज्यादा सेफ्टी रहता है. Whereas if you look at healthcare, it is the risk to life is more than 1 every 1000 admissions. So getting admitted to a hospital can at times be as dangerous as climbing Everest. So हमें ensure करना है. Of course, this is a very old study. Recent advances, recent checklists, recent safety protocols have improved the situation quite a lot. But हमें ensure करना है कि हम hospitals को safe रखें. तो जो भी फाइंडिंग्स हैं हमको डेली राउंड्स पे मिलती हैं वो पिकअप करनी है. देयर शुड बी नो कैजुअल अप्रोच. अलर्ट रहना है हमेशा एंड ट्राई टू रीच अप टू एयरपोर्ट सेफ्टी लेवल्स या एयर फ्लाइट सेफ्टी लेवल्स. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेमोनिक है एक ए पिंच जिसको आप याद रख सकते हैं. ए पिंच में क्या आता है? ए से एंटी इन्फेक्टिव्स, पी से पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, आई से इंसुलिन, N से narcotics and sedatives, C से chemotherapeutic agents and H से heparin. So ये जो A pinch medicines हैं, they should be kept stored separately. They are very dangerous to life और इनको cautiously cross check करके cross verify करके ही use करना है. Depending on your level of work, you can also store them under lock and key. So in a small nursing home, in a small hospital, हम लोग इसको lock and key में store करते हैं. So all these drugs are asked for by the staff nurse or the pharmacist and वो lock से निकाल के दी जाती हैं so that they are not easily accessible और अपना safety थोड़ा high level हो जाए. 6 R's क्या हैं drug administration के? तो पहला R है right drug. सेकेंड इज द राइट डोज. सो हम राइट पेशेंट को राइट ड्रग दे रहे हैं, राइट डोज में दे रहे हैं. वी आर गिविंग इट थ्रू द राइट रूट. आईवी है, आईएम है, ओरल है. टाइमिंग, उसको राइट टाइम पे दे रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट पेशेंट, जैसे मैंने कहा कि पेशेंट सही है, सही पेशेंट को सही दवाई देनी है एंड उसका हमें राइट डॉक्यूमेंटेशन करना है. सो हर बार हर दवा, हर डोज देने से पहले हमको ये 6 R टिक करने हैं. ऐसा नहीं है कि हाँ ये 3 पेशेंट को टैक्सिन चल रहा है, चलो इसका 50 है, उसका 100 है, उसका 150 डोज है, चलो तीनों भर के ले जाते. नहीं, 50 mg के डोज के लिए भी 6 R अप्लाई करना है, 100 mg के डोज के लिए भी, 150 mg के डोज के लिए भी. एवरी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट इवेंट और उसमें हमको ये 6 R अप्लाई करके ही आगे बढ़ना है. अनलेस these 6 rights are verified, we should not administer the drug. अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट डाउट में है या वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, विदहोल्ड, वेट. उसको कंफर्म करने के बाद ही दवा एडमिनिस्टर करना है. इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक रिटन ओवर होना चाहिए. सो काफी हॉस्पिटल्स में ओवर, वो क्या बोलते हैं, तोंडी ओवर घेतात. बोल दिया, ओवर दे दिया, हो गया. तेरे को बोला था ना, अरे रह गया, तूने नहीं बोला रे, पक्का बोला था, मेरे को याद है तू जब वो व्हाट्सएप चेक कर रही थी मैंने बोला था. तो ऐसा नहीं, देयर शुड बी अ रिटन ओवर. आइसोबार फॉर्मेट एक ओवर देने का फॉर्मेट है जो कि बहुत अच्छा फॉर्मेट है. काफी हॉस्पिटल्स वो यूज करते हैं. अगर नहीं यूज करते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग इट. आइसोबार फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, यू कैन सी इट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो. सो आइसोबार में आइडेंटिफाई करते हैं, ये पेशेंट है, ये स्टाफ है. सो पेशेंट को आइडेंटिफाई करिए, खुद को आइडेंटिफाई करिए. हेलो मिस्टर सो एंड सो, मैं सिस्टर प्रतीक्षा बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके पेशेंट को देखने वाली हूँ. ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है या ये हमारी टीम है और हम लोग आपका दवाई वगैरह देंगे. कुछ रहेगा तो ये बेल है, मुझे बुला लीजिएगा. पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, करंट डायग्नोसिस क्या है, आज के उसके इमीडिएट इश्यूज क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, कुछ रिपोर्ट्स आए हैं तो वो ऑब्जर्वेशन. अरे ये पेशेंट का ना हार्ट रेट कल तक 80 रहता था, आज 90-100 के बीच में मिल रहा है. सो रिसेंट चेंजेस क्या है, रिसेंट वाइटल साइंस कैसे बिहेव कर रहे हैं और उससे रेलेवेंस क्या है. शायद डिहाइड्रेशन में रहेगा, बॉस को पूछ लेना राउंड्स पे फ्लूइड बढ़ाने हैं क्या. सो उसको मेडिकली कोरिलेट करना है. बैकग्राउंड हिस्ट्री, कुछ प्रॉब्लम्स थे, कल इसको ये दवाई के बाद ना 2 घंटे बाद रैश आया था, हो सकता है उससे, तो आज देते टाइम जरा ध्यान रखना.
या कल ये पेशेंट को यूरिन करते समय बर्निंग हो रहा था, बाद में तो नहीं बोला है पर आज देख लेना। सो बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ा मिलना चाहिए। प्लान, आज का ये प्लान किया है, मैंने ये किया, उससे ये हुआ, मैंने इसको बार बार सक्शन लग रहा था तो मैंने ऐसा किया, नेबुलाइजेशन दिया। सो वो एक प्लान सोच के यू हैव टू ऐड टू द ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं आए ओवर लिया, अपना 8 घंटे का ड्यूटी बजाया, दवाई दिया, इंजेक्शन टिक किए और चल दिए घर। नहीं, आपको वो पेशेंट के ट्रीटमेंट में ऐड करना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, नहीं कल के मुकाबले आज मुझे अच्छा लगा, 8 घंटे में ये बेटर हुआ, फीवर ही आया नहीं, बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। सो दैट प्लान ऑफ एक्शन, ट्रीटमेंट हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड। ट्रीटमेंट कुछ सामान नहीं है कि आपने लिया और ओवर दे दिया, आपको उसको आगे भी बढ़ाना है, गेम को चलाना है जो बोलते हैं। तो आपको पेशेंट की हेल्थ को आगे बढ़ाना है, इंप्रूव करवाना है। और एंड ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट है। सो कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग, क्या पेशेंट का है, क्या इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, इसका ये इंपॉर्टेंट सैंपल है, ये भेजना है। एंटीबायोटिक लिखा है, चालू करने से पहले प्लीज ब्लड कल्चर भेज देना। ऐसा नहीं एंटीबायोटिक चालू करायचं एक ब्लड कल्चर पाठवायचं, अभी रात को किधर लैब में भेजेंगे, कल सुबह ब्लड कल्चर भेजेंगे, नहीं, उससे गड़बड़ हो जाएगा। सो आपको टाइमिंग एक्सेप्ट करना है, टाइमिंग अंडरस्टैंड करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर लेना है और वो आगे ट्रांसफर भी करना है। सो ट्राई टू एंश्योर कि एक सीनियर पर्सन ओवर सुपरवाइज करे अगर पॉसिबल है। सीनियर पर्सन यानी सीनियर स्टाफ हो सकते हैं, मेट्रिन हो सकते हैं, आरएमओ हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकते हैं। एक चीज याद रखिए जो हम लोग अपने फेलोशिप टाइम से बोलते हैं, ओवर लेना होता है, टेक ओवर। ये मत सोचिए तुमने ओवर दिया नहीं, डू नॉट डिपेंड ऑन अ गिवन ओवर। नाही मला ओवर काय भेटला नाही, मेरे को ओवर दिया नहीं, आपको ओवर निचोड़ के लेना है। जैसे एक पुलिस स्टेशन में वो करवाते ना, एक कन्फेशन करवाते हैं, इंटरोगेशन, ये क्यों किया, नहीं सर ने बोला, सर ने बोला नहीं। जैसे हम लोग अपना पढ़ाई के टाइम, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम, सर ने बोला मतलब क्या, सर को रीजन पूछ के आओ, आई विल नॉट लेट यू गो टिल आई गेट अ कंप्लीट ओवर। हे औषध का केली, हे डोज का दिली, पूरा ओवर बराबर से दो। ये नोट्स नहीं आए, तू डाल देना ना, मैंने वो एंट्री नहीं किया, नहीं अपना एंट्री करके जाओ प्लीज। हे आईवी आउट है, आईवी डाल कर जाओ, क्योंकि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे भी नहीं मिलेगा, तो दोनों मिलके डालते हैं। सो ओवर कंप्लीट लेना है, ओवर देने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आपको ऐसा ओवर लेना चाहिए कि जो देने वाला है वो परेशान हो जाए कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा ओवर लेता है, इसके टाइम अपने को सब प्रॉपरली करके रखना है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन के बाद अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं। आई होप एवरीवन पेन पेपर एंड कैलकुलेटर ओके अरेंज कर लीजिए। तो थोड़ा बचपन का ज्ञान से हम शुरू करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। सो कॉमनली हम जब बात करते हैं, पेशेंट से भी पूछते हैं कितना आराम हुआ, 1 रुपये मध्ये किती आराम फरक पडला, 10 पैसे फरक पडला, 50 पैसे मतलब 50 पैसा, हाँ 50% हो गया। सो कैलकुलेशन, ये भाषा सब समझते हैं, रुपए पैसे वाली, 100, 1 में 100। पर हर चीज में 1 में 100 नहीं होता है, कुछ में 1000 भी होता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अभी अपने को किलोमीटर मीटर से तो ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ 1 लीटर में 1000 ml, ये अपने काम की चीज है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम mg। हाँ ज्यादातर हम दवाई पे दिखते हैं जीएम और एमजी लिखा होता है, जीएम एमजी उल्टा नहीं है, सिर्फ बहुत फर्क है, 1000 का फर्क है, 3 डेसिमल का फर्क है। सो 1 ग्राम में 1000 mg मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम। सो कुछ कुछ दवाइयां हैं, कुछ कुछ इंजेक्शन है जो हम माइक्रोग्राम में देखते हैं। सो वहां पर हमको ये कैलकुलेशन या ये चार्ट बहुत जरूरी है, ये अपने को हमेशा पता रहना चाहिए, नहीं तो अपन कंफ्यूज ही होते रहेंगे और ये चीजों में हमेशा मिस्टेक करते रहेंगे, क्योंकि इसमें 1 डेसिमल का फर्क मतलब 10 टाइम्स आपने वो चीज बिगाड़ दी, 10 टाइम्स। तो ये एरर का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा डेसिमल्स का गड़बड़ होना। अब देखते हैं हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो कॉमनली हम लोग क्या सिरिंजेस यूज करते हैं, खासकर एनआईसीयू में 50-60 ml के सिरिंज होते हैं, 20 ml के सिरिंज होते हैं, 10 ml के सिरिंज होते हैं, ऐसे बराबर देखा है ना सब लोग ने ये सिरिंजेस।
और 1 ml का सिरिंज होता है, 2 ml का सिरिंज होता है, 5 ml का। तो उसमें से हमारा हीरो ये 1 ml वाला सिरिंज है, क्योंकि ड्रग डाइल्यूशन के लिए बहुत काम की चीज है। इसमें 1 ml दवाई या 1 ml फ्लूइड आता है और इसको हम अक्सर डाइल्यूशन के लिए यूज करते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर्स हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये नंबर्स हर नंबर के बीच में 10-10 लाइंस हैं। सो मतलब 10 into 10 100 नंबर्स हैं, ये 100 की गिनती है इसमें एक्चुअली। तो हम इस 1 ml की सिरिंज को अब से 100 मार्क की सिरिंज बुलाएंगे। ठीक है, इसमें 100 मार्क है। कितने मार्क की दवाई देनी, यानी 100 पैसे हैं एक तरह से, 1 रुपए में 100 पैसे। सो 1 ml में 100 मार्क्स। ठीक है, सो कितने मार्क्स देने हैं, 50 देने हैं, मतलब 5 तक देना है आपको। 60 देने मतलब 6 तक देना है। 75 देना है, मतलब 7 और 8 के बीच में जो 5 का एक बड़ा मार्क है वहां तक 75 हो गया वो। सो हर नंबर पे 10 मार्क्स हैं और आपको टोटल 100 मार्क्स हैं इसमें। अब कुछ इंजेक्शन हैं, जैसे ये है एमपी ट्रस्ट, एम्पिसिलिन सल्बैक्टम। इसमें लिखा तो है 1.5 ग्राम्स, दिख रहा है राइट हैंड साइड पे बॉक्स में 1.5 ग्राम्स लिखा है, पर इसमें जब हम दवाई देखते हैं तो 1 ग्राम ही दवाई है। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है नोट करना। तो आपको बॉक्स में क्या है, एम्पिसिलिन 1 ग्राम है और इसको यूज करने के लिए डाइल्यूशन कैसे करना है वो लिखा है। अगर आपको आईएम देना है तो 3.2 ml में डिसॉल्व करिए, और अगर आईवी देना है तो 5 ml में। ठीक है, सो ये उन्होंने किस तरह से कैसे डाइल्यूट करना है, कितने क्वांटिटी में, आईएम के लिए डिफरेंट है, आईवी के लिए डिफरेंट है, वो भी बॉक्स पे दिया है। ये हमेशा पढ़ना अपने लिए बहुत जरूरी है। और बेसिक सॉल्ट क्या है, ईच वायल कंटेन्स 1 ग्राम। 1 ग्राम यानी कितना mg हो गया, 1000 mg, बराबर। ये देखिए 1 ग्राम 1000 mg। सो ये हमको देखना है कि वो दवा कितना है। 1.5 ग्राम लेकर कैलकुलेट करने नहीं बैठना है। तो हमेशा कैलकुलेशन से पहले दवा का कंटेंट पढ़ना है, डाइल्यूशन करने का तरीका पढ़ना है। सो हमने कंटेंट पढ़ लिया, हम डाइल्यूट इस तरह से करते हैं। तो डाइल्यूशन के लिए हम अक्सर 2 सिरिंजेस यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर एंटीबायोटिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 ml सिरिंज है, हमने उसमें नॉर्मल सलाइन या स्टेराइल वाटर लिया है, स्टेराइल वाटर। और जो राइट हैंड साइड पे 1 ml की सिरिंज है, हमारी 100 मार्क वाली सिरिंज, उसमें हमने 65 मार्क्स दवाई ली है, और हम वो 65 मार्क्स वाली सिरिंज को हम 10 ml वाली सिरिंज में स्टेराइल वाटर में ऐड करते हैं, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में। तो इस तरह से हम दवा को सेपरेटली लेकर डाइल्यूट करके 3 ml हमने डाइल्यूट किया है, 3 ml में हमने ये ड्रग डाइल्यूट की है, और उसको हम ओवर 15 मिनट्स, ओवर हाफ एन आवर, जो भी डिफरेंट ड्रग के हिसाब से प्लान है आपका, जो प्रोटोकॉल्स हैं उस हिसाब से आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पे स्कूल में करते थे, एक्स ढूंढो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अब समझिए। आपके पास एक एंटीबायोटिक है जिसमें 100 मिलीग्राम इज देयर इन 1 ml। 100 मिलीग्राम आपको फर्स्ट लाइन में दिख रहा है 1 ml में है, और आपको 35 मिलीग्राम देना है। तो कैसे देंगे, कितना ml देंगे आप, देखें, चलें, सबने कैलकुलेटर ओपन किए हैं। सो पहले ही चीज सबसे, हम वो 1 ml को रुपए में कन्वर्ट करते हैं। 1 ml मतलब 100 मार्क्स, बराबर। तो 100 mg 100 मार्क्स में है, 35 mg कितने मार्क्स में है, ये x हमें पता करना है। तो हम अक्रॉस जाएंगे, 100 ऊपर जो 100 है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है, और नीचे जो 35 है उसको ऊपर के 100 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 35। सो अब x को तो हमें ढूंढना है, x वहीं रहता है, x के पास वाला जो 100 है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, वो नीचे चला जाता है अगले कैलकुलेशन में, अगले स्टेप पे। सो x इज इक्वल टू 100 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 35 मार्क्स। तो आपका इसमें आंसर आएगा 35 मार्क्स आपको यूज करना है। सबको समझ में आया? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले, नेक्स्ट सवाल। चलो, अब आपके पास काफी कॉमन है ये इंजेक्शन, 50 mg है 1 ml में।
each 1 ml contains 50 mg of the drug. तो 50 mg is equal to 1 ml. 38 mg देना है डोज. डॉक्टर ने बोला है 38 mg दो. कितना लेंगे आप कैलकुलेट करेंगे? कर रहे हैं सब लोग? सो हमने पहले तो 1 ml को 100 मार्क्स बना दिया, करेक्ट? सो आपका x क्या आएगा? 38 into 100 डिवाइडेड बाय 50. करिए चलो सब लोग. 38 into 100 डिवाइडेड बाय 50 बराबर कितना आ गया? करेक्ट आंसर क्या है? 76 मार्क्स बराबर. इज एवरीवन गेटिंग दिस राइट? सबको मिल रहे हैं आंसर बराबर? लेट अस गो टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन. अमिका सेन. अभी केसेस आ गए हैं, अभी सबको आंसर देने हैं अच्छे से. केसेस आ गए ये. तो केस 1 अमिका सेन देना है 100 mg is in 2 ml vial. Each 2 ml contains 100 mg of the drug. ऐसे लिखा है vial. I have to give 38 mg. तो पिछले वाले में कैलकुलेशन से पिछले कैलकुलेशन चेंज है. पिछले में 1 ml था, 50 mg in 1. इसमें 2 ml है. तो आसान काम है, इसको बोलो मुझे नहीं आ रहा. पेट तो छोड़ देगा. कैलकुलेशन क्या आएगा? आसान मजा है. Can we have some silence please? Quiet. मेरा तो नहीं है भाई. तो इतनी जमीन है. नवाब है. जमीन है सारे मैडम के पीछे. Someone's audio is on. So can we have the calculation? Thank you very much. Calculation. So x will be 38 into 200 बराबर divided by 100. तो कितना आएगा? 76. करेक्ट आंसर. कैलकुलेट कर रहे हैं ना आप लोग? तो इसमें आंसर आएगा 76 मार्क्स. सो वी गो टू द नेक्स्ट ड्रग जेंटामाइसिन. ये सब कॉमनली यूज ड्रग्स हैं. काफी एनआईसीयू में, काफी पीडियाट्रिक सेटअप्स में कॉमनली यूज होते हैं. सो वी गो टू जेंटामाइसिन. जेंटामाइसिन सेम डोज 38. अभी आप देख रहे हो लास्ट 3 केसेस में हमने डोज सेम रखी है, बट आपको आंसर्स अलग आएंगे. सो इसमें 38 mg जेंटामाइसिन देनी है. वायल शोज 80 मिलीग्राम इन 2 ml. सो आपका कैलकुलेशन होगा 38 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 80. सो आंसर क्या आएगा? डिड एवरीवन गेट 95? 95 आया आंसर. ओके, वी गो टू द नेक्स्ट. एम्पिसिलिन. सिंपल एंटीबायोटिक्स. बेसिक. अब एम्पिसिलिन में 250 मिलीग्राम का वायल है हमारे पास. हमने उसको 5 ml में डिसॉल्व किया. आपने देखा ना, उसमें लिखा था एम्पिटम के वायल में. तो 1000 mg का होता है, 250 का है अभी हमारे पास. उसको 5 ml में डिसॉल्व किया और आपको देना है 180 mg इज द डोज. सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 ml इज 500 मार्क्स, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय 250. सो ये आएगा 360. Dr. Prashant, can we wind up in 5 minutes? Yes, ma'am. We'll just complete it in 5 minutes. So इसमें आएगा 360 मार्क्स या 3.6 ml. ऐसे ही कुछ ड्रग्स हैं, पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम, अमोक्सिसिलिन, क्लेविलेनिक एसिड, सिफोपेराजोन, सल्बैक्टम, जो कॉम्बिनेशंस हैं. जैसे पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम 1.125 ग्राम होगा, पर उसमें बेस सॉल्ट इज 1000 ग्राम. तो आपको 1000 ग्राम्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं. तो यहाँ का कैलकुलेशन होगा 325 mg के लिए आपको लेना है 325 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000. सो 176 mg. ओके. लैसिक्स के बॉटल पे लिखा है 4 ml वायल एंड 10 mg डोज.
तो इज इट करेक्ट 4 ml में 10 mg है? नहीं, 1 ml is 10 mg. The total dose contained is 40 mg. So don't make that error. 4 ml बहुत बड़े ब्लॉक में बोल्ड में लिखा है, पर वो 10 mg is present in 1 ml. So जब हम लैसिक्स कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली छोटे बेबीज के लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए, तो डोज बहुत छोटी है. अब ये बेबी को मेरे को 0.65 mg देना है, लेस देन 1 milligram. So you cross multiply to find x. 10 mg in 1 ml. So 100 marks में 10 mg है, 0.65 into 100 divided by 10. इसका आंसर आएगा 6.5 मार्क्स. 6 मार्क्स, 7 मार्क्स ओनली. सो ये 6-7 मार्क्स जो हैं वो आपके वायल में 1 से भी, जो 1 है नंबर आपके सिरिंज में, आपके मैजिक सिरिंज में, 1 ml वाली सिरिंज में, उसमें सिर्फ 6 लाइंस आपको लेनी है. 6.5, 6 से 7 लाइंस के बीच में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हम कई बार 6 और 7 जो लिखा है उतना 65 मार्क्स दे देते हैं, दैट इज 10 टाइम्स द डोज. तो सोचिए क्या हालत हो जाएगा. सो स्पेशली स्मॉलर ड्रग्स के लिए बहुत केयरफुल रहना है, क्रॉस चेक करना है. ओके, दिस इज अनदर यूनिक इंजेक्शन. सो हमेशा याद रखिए, दिस इज फैल्सिगो आर्टिसिनेट. इसमें 3 बॉटल हैं, तो कंपनी ने गलती से एक्स्ट्रा बॉटल नहीं दी है, या वो फ्री का ऑफर नहीं दिया है. इसमें आपको पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को वायल में डिसॉल्व करना है, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और फिर आपको एनएस नॉर्मल सलाइन जो है, छोटा बॉटल, दूसरा बॉटल 5 ml का, उसमें डेक्सट्रोज या नॉर्मल सलाइन में मिक्स करना है. सो इसमें जो 3 बॉटल्स हैं, फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट से डिसॉल्व करना है और फिर दूसरे डाइल्यूएंट से. सो ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस. आपको लेफ्ट साइड पे इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, वो रीड करके फॉलो करना है, सो दैट हम ड्रग को ऑप्टिममली यूज कर पाए. सो स्टेप्स फॉर गिविंग द करेक्ट ड्रग, 6 आवर्स, 6 राइट्स ऑफ द पेशेंट जो है, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, वो फॉलो करने हैं. करेक्ट कैलकुलेशन करना है, जो हमने कैलकुलेशन मेथड देखा है उसको डॉक्टर से वेरीफाई करवाना है, कैलकुलेशन को उसको सही तरीके से देना है, और जब आप दे रहे हो उसको एक दूसरे कलीग या आरएमओ से वेरीफाई करवाना है. तो जैसे डॉक्टर जेसल ने भी बोला कि हम लोग साइन लेते हैं, सो दिस इज हाउ वी डू. जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, हमने एक्स मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ड्रग कैलकुलेट की है. आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे ड्रग का टाइमिंग, कितने तारीख को ड्रग लिखा है, कब वो कैलकुलेशन किया है, 12 बजे, एंड डॉक्टर का साइन है. सो ड्रग स्टाफ नर्स ने, आरएमओ ने कैलकुलेट किया है, इट विल बी साइंड बाय अनदर डॉक्टर और आरएमओ. सो ड्रग सिर्फ स्टाफ कैलकुलेट करके स्टाफ अपने आप से नहीं देंगे, उसको हम डॉक्टर से वेरीफाई करवाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट स्मार्ट स्टाफ डज स्मार्ट वर्क. वो याद रखना है. स्मार्ट मीन स्पेसिफिक वर्क, मेजरेबल वर्क, अचीवेबल वर्क, रियलिस्टिक वर्क एंड टाइम बाउंड वर्क. याद रखिए, एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं सिखाता है हमें. अब मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 9 साल से स्टाफ नर्स है, मेरे को सब आते हैं, नहीं. वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस अलोन. सो हमें जो भी चीजें हम करते हैं, या जो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है. Always have a quality improvement form, always have a adverse event form. Participate in improving the quality or decreasing the errors in the hospital. We have a incident reporting form like this. तो इसमें अगर कोई भी हॉस्पिटल में ड्रग एरर या कैलकुलेशन एरर या एडमिनिस्ट्रेशन एरर होता है, हम उसको एंटर करते हैं, स्टाफ उसको साइन करता है, उसको रिपोर्ट करता है. इट इज टेकन अप इन द वीकली मीटिंग, और हम वीकली मीटिंग में उसको इम्प्रूव करने के स्टेप्स लेते हैं. It is not to point the blame. That error can take place, can happen to anyone. So हमको उसको सुधारना है, वो एरर को वापस नहीं होने देना है. So हम उसमें layers of security, layers of safety add करते हैं as a hospital, as a system. Those layers are implemented, और उनको फिर system में हम protocols में include और inculcate करते हैं. So incidents reporting is very very important. इससे पहले कि कोई हमें बोले कि यार तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई, द डे यू वर बॉर्न वाज अ मेडिकल एरर. सो वी शुड नॉट कम टू सच अ स्टेज कि कोई हमारे लिए ऐसा बोले. इसलिए हमको अपने मेडिकल एरर्स और मेडिकेशन एरर्स कम से कम करने हैं. रिमेंबर दैट एवरी न्यूबॉर्न डिजर्व्स द बेस्ट, एंड वी एज अ टीम, एज अ स्टाफ, एज अ यूनिट हैव टू वर्क फॉर decreasing the mistakes, decreasing the errors, and improving the health of the patient admitted with us. Thank you very much. Any questions, any doubts, any suggestion?
of course, Anshu madam, Jaisal madam, Dr. Amit Tagare, all of us are practicing clinicians. So any suggestions and any views from your side also are most welcome. Thank you, Dr. Prashant. That was a very, very nice and lucid lecture and very smart way of calculating smartly all the medications. Especially for inotropes, we should, I think, put up in all our NICU, especially for inotropes and emergency drugs. I think in all NICUs, we should put a list. And there should be 2 nurses who are trained, one nurse who's calculating and one who counter checks, as you rightly mentioned. Yes, to avoid mistakes. Yes. We have put a chart of all the inotropes and all the other drugs also. I wanted to mention it. We are following neofacts, so we can follow a common book. So every drug, every time we use that drug, will be checked from the book, the dosages, and then only entered. And of course, inotropes ke liye, jaise aapne kaha, we have a chart and we follow that chart, and it is cross-verified by the nurses also. So drugs likhte hain hame, but cross-check wo log karte hain, they are more than eager to find mistakes. Ki chalo sir ka mistake nikalte hain. So it works as a double check mechanism. Correct. Thank you. I think this medication errors is one of the most important learning lessons. And we have to keep revising it again and again and keep teaching our nurses plus all of our junior residents as well. Because it's an ongoing training which is most important. True, ma'am. We keep learning from the errors we make actually. Yes. And there is never an end to it. Yes. True that. Thank you, Dr. Thank you, ma'am. Any questions, ma'am? Over to Jaisal, ma'am. Thank you, Dr. Shetty. Thank you, Dr. Prashant, brother, and Dr. Dikshit. A wonderful talk, extremely important topics, and you did fantastic job. We have already exceeded the time. Thank you to everyone for patient listening. It's always wonderful to hear you, Dr. Dikshit. And with that, we can probably end this session over here and see you in the next. Thank you, ma'am. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you.